this is Ranjeet. I'm head of sales capability and co-author of the book Winning It Together. परफॉर्मेंस अप्रेजल कॉन्वर्सेशन के अंदर आज हम बात करेंगे कि हमारी परफॉर्मेंस अप्रेजल की कॉन्वर्सेशन बैकवर्ड नहीं होनी चाहिए, बैकवर्ड माइंडसेट नहीं होना चाहिए। पीछे मुड़ के हम नहीं देखेंगे, जो हो गया सो हो गया, लेकिन उस पास से हम लर्निंग्स लेंगे और क्या चीज़ें बेहतर कर सकते हैं वो चीज़ें आगे इम्प्रोवाइज करेंगे। तो वी हैव टू फोकस ऑन फॉरवर्ड लुकिंग कॉन्वर्सेशन rather than backward looking conversation, right? आइए जी बात करते हैं मजीद इसमें क्या होता है। Make the conversation forward looking. It's natural to associate peer reviews with past performance, but focusing on the future makes the performance appraisal conversation more useful. You and the employee can come up with a common way forward that incorporates the employee's personal careers, goals, and meets the management expectations as well. For the reason, the performance appraisal conversation should mainly focus on addressing skill gaps, developing employees' competencies. Here are some future focused questions you can address in the performance appraisal conversation with the employee. Number one, which skills do they need to learn provide more value in their role? Are they in the right role based on their career aspirations, skills, and qualifications? How can they optimize their strengths to contribute more to the organization goals? What are their career aspirations, and do they align with the company's objectives and purpose? If they don't align, how can you correct it? What obstacles are standing in the way of good performance? For instance, if they are customer services, which challenges of CRM, customer relationship management, are they experiencing? What kind of networks do they need to develop perform better in their role and successful in career aspirations? Which leaders and peers can coach them and improve their performance and future performance as well? What training can help them achieve their goals? Studies shows 33% of skills needed 3 years ago are no longer relevant. What trainings can help them achieve their goals? Focusing on their past performance makes the employee feel like they are on trial. Focusing on future performance sets you up as their coach. It makes it easier to work together towards achieving their personal goals and organizational goals. In the forward-looking conversation, you have to write down, you have to mention, you have to be very much clear the objectives of the organization, the purpose of the organization, why part of the organization. When you got to know the purpose and the vision and why part of the organization, then you align your objectives as per the organization objectives. अगर इन दोनों के अंदर तजाद है, अगर इन दोनों के अंदर अलाइनमेंट नहीं है, तो आप कोचिंग करके कैसे रेक्टिफाई करेंगे कि एक इंडिविजुअल अच्छा परफॉर्म कर रहा है या बुरा परफॉर्म कर रहा है? फॉर एग्जाम्पल, हमें अपनी कस्टमर सर्विसेज को बेहतर करना है। ऑर्गेनाइजेशन ने अपने साल के ऑब्जेक्टिव्स में पूरी कंपनी को असाइनमेंट दे दिया, टारगेट्स भी बना दिए और सबके ऑब्जेक्टिव्स में लिखवा दिए, लेकिन आपकी परफॉर्मेंस से आपके जो आप काम परफॉर्म कर रहे हैं उसमें कस्टमर एक्सपीरियंस ही नहीं है। कस्टमर की जो रिलेशनशिप मैनेजमेंट आपको करनी थी उसका ऑब्जेक्टिव ही नहीं डला हुआ। अगर डला हुआ है उसकी वेटेज बहुत कम है, अगर वेटेज बहुत कम है या फिर आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं है। सो इट मीन्स देयर इज अ completely mismatch in your objectives and organization objectives. इन तमाम चीज़ों को अलाइन करना पड़ेगा। जब ये चीज़ अलाइन है आपस में, तो आपको फोस्टर करना पड़ेगा एक चीज़ को कि अगर मैं अभी यहाँ पर
कहाँ खड़ा हुआ हूँ, मेरी ऑर्गेनाइजेशन कहाँ खड़ी हुई है, ऑर्गेनाइजेशन कहाँ जाना चाहती है, मैं उसको आगे बढ़ने में क्या मदद कर सकता हूँ, और आने वाले वक्तों में ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पहुंचेगी, मैं उसको उस जगह पहुंचने में क्या मदद कर रहा हूं। ये तमाम चीज़ें जो हैं परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में रिफ्लेक्ट होनी चाहिए, बिकॉज दिस इज कॉल्ड व्हाट, फ्यूचर फोकस्ड कॉन्वर्सेशंस।